Hi, so welcome to our current affairs series. So let us start with today's article. अगर आज के आर्टिकल्स देखें तो काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आज आए हैं, ठीक है. सो फर्स्ट आर्टिकल हम लेने वाले फ्रॉम द एक्सप्लेन सेक्शन. दिस इज अबाउट footing the climate action bill. So if we see this article, why does this becomes important? Try to understand this, that the whole world is going through a phase of climate change. और सबसे ज्यादा important क्या चीज होने वाली है उसको स्टॉप करने के लिए, that we have to change the way we produce energy, we have to change the way we use appliances. How is that going to happen? That shift is required towards green renewable energy. And eventually वो करने के लिए बहुत सारा finance चाहिए, right? And developing countries, they're asking for such finance from developed countries from last many years, but we've not able to see that kind of a response from their side. So let us try to understand this, right? So जब भी हम बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस की, तो दो चीज़ों के लिए हमें फाइनेंस चाहिए होता है. एक हमें चाहिए होता है फॉर मिटिगेशन पर्पस, and the second is required for the adaptation purpose. All right. So we'll try to understand क्या क्या problems हैं climate finance में, क्या targets हैं, क्या नए targets अब set करने वाले हैं, हम सारी चीजें समझने की कोशिश कर सकते हैं. So in 2009, developed countries committed to raising $100 billion annually for the climate change. They have not done so, and ahead of COP29, which is going to happen this year in Azerbaijan, Baku, negotiators are working on a new climate finance budget. So try to understand. मैंने एक बहुत अच्छा फिगर दिया है जिसमें 2013 से लेकर 2021 तक का इन्होंने ओवरऑल डेटा दिया कितना क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबल हुआ था. This climate finance has been further divided into various categories, including bilateral public, multilateral public, export credit, mobilized private, and finally is the overall total fund. तो अगर हम अभी तक देखें, पिछले 7-8 साल में एक बार भी $100 बिलियन का विंडो ब्रीच नहीं हुआ है. दैट इज वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. सेकंड, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से ये फंड्स को डिवाइड किया बायलैटरल पब्लिक एक्सेट्रा, ऐसे हमने शुरुआत में नहीं बोला था. वी आस्क फॉर डायरेक्टली कंसेशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज एट लीस्ट द चीपर लेवल फाइनेंस उनको करना था, बट वैसे उस तरीके से ये बना नहीं है. अगर आप इनके फर्दर डेफिनेशंस में देखोगे, दैट द बायलैटरल पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस, दिस इज प्रोवाइडेड बाय डोनर कंट्रीज, डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन. मल्टीलेटरल वाला है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह दिया. एक्सपोर्ट क्रेडिट है, इस पे उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं ऑन द सर्विसेज एंड गुड्स रिलेटेड टू क्लाइमेट रिलेटेड. एंड फाइनली इज द प्राइवेट फाइनेंस. सो एनीवे, data is given by OECD and this is the overall climate finance provided and mobilized. अब देखो mobilized, it's a very gray area, right? Let us see the overall perspective. So in 2022, climate change conference which happened in Sharm el Sheikh decided to set up a loss and damage fund, right? What is loss and damage fund? And whichever countries, the developing countries, they are facing the problems or they have to recover from the climate disaster. जो भी लॉस हुआ है या डैमेज हो चुका है, उसके लिए तो कुछ कंपेंसेशन होना चाहिए ना. अडेप्टेशन तो आगे फ्यूचर में करते रहेंगे, बट उसके लिए क्या करेंगे? एंड इवेंचुअली द दुबई कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर, it also talked about global stock take. Global stock take को उन्होंने एक तीन टर्म दे दिया, GST, which is not good enough because India में GST means something else. But anyway, global scoping, it's about reviewing what kind of climate policies are being pursued by various countries और उसका impact क्या रहा है. So a review of ongoing climate action which resulted the first ever explicit acknowledgement of need to transition away from fossil fuel, and we have to triple the global renewable energy capacity by 2030. This is something which you need to remember. And this year the focus is going to be on NCQG. Now ये नया टर्म है जो आपसे प्रीलिम्स पे पूछा जा सकता है. What is related to NCQG? So what is this related to? New collective quantitative goal on finance, जो इस साल हम फाइनल करने वाले हैं. The expression most likely है ना जो इसको dominate करेगा, this is NCQG. अब इसके बारे में पढ़ेंगे. What is this? So this is a convoluted way to describe the new amount that must be mobilized by developed countries every year from 2025 onwards to finance climate action in developing countries. ठीक है? Previously, this amount is going to be way higher than $100 billion. And why is this important? This NCQG is extremely important. For what purpose? For development, for developing countries, and discussion on this new amount has been ongoing for a couple of years at least. काफी साल से इस पे बात चल रही है कि यार एग्जैक्टली अमाउंट कितना होना चाहिए. एंड रिसेंटली एक 2-day मीटिंग हुई है इसमें विद रिस्पेक्ट टू दिस इन डेनमार्क, उसके बारे में बात करेंगे बाद में. सो हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड राइट नाउ? अब दिस फिगर इज समथिंग विच इज nobody is able to have a kind of consensus on this, है ना. अगर हम इसको पूरा ठीक से पढ़े तो in 2021 UNFCCC की मीटिंग हुई थी, and in this meeting they asked about around $6 trillion annually.
6 trillion annually between then and 2030 just to implement their climate action plan. $6 trillion, which is a humongous sum, right? It is around twice the GDP of India. Now the important thing is, अभी जो फाइनल एग्रीमेंट साइन हो रहा है उसमें बात जो चल रही है, द ट्रांजिशन टुवर्ड्स लो कार्बन इकोनॉमी, दैट कैन ओनली हैपन if we spend $4 to $6 trillion every year until 2050, तभी ये हो पाएगा. And now what is very important that कि अभी recently there was a target which was given in Dubai that the cost of shifting towards renewable energy will be around $30 trillion until 2030, and this is a figure which is given by International Renewable Energy Association. उन्होंने इस फिगर को हमें दिया है. Now anyway, the important thing is कि अगर हम 5 से 60 ट्रिलियन डॉलर की अगर फिगर लेके चलें, it means 5 to 7% of global GDP. जितनी भी ग्लोबल जीडीपी है वर्ल्ड की, उसका 5 to 7% है. अगर 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर को हम अज्यूम करके चलते हैं, एनीवे, ओके, सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज. अब प्रॉब्लम क्या है, पहले इसकी जो कॉस्ट थी वो हार्डली 1 to 1.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी था, जो बढ़ के 5 से 7% तक हो गया है. एंड दिस इज समथिंग विच इज द राइजिंग कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट इन एक्शन. अगर हम एक्शन टाइम पे नहीं लेंगे, ट्रांजिशन नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजीज क्लीनर नहीं यूज करेंगे, तो ये कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी. ये कभी भी कम नहीं होने वाली है, ठीक है. इसलिए हमें एक्शन अभी लेना ही पड़ेगा. इनफैक्ट इंडिया हैज सेड टू द डेवलप्ड नेशन दैट कि यार आप इसको कम से कम $1 trillion पर ईयर तक ही रख लो, 5 से 7 तो छोड़ो, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज अ ह्यूमंगस फिगर एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच आल्सो. सबको पता है उस चीज का. ओके, इवन द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ UNCCC क्लाइमेट चेंज, ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट वी आर नॉट talking trillions, है ना, we are talking trillions, not billions. हम billions की बात ही नहीं कर रहे. $100 billion बहुत पुरानी फिगर हो चुकी है. While ironically the organization, his own organization, Simon Steel की जो खुद की organization, that is also facing the shortage of funds. So how will this money be used? इसका हम किस तरीके से utilization करेंगे? So developed countries would like to make sure that transparent and inclusive process is instituted to monitor and measure whatever amount is finally agreed upon. Unlike the $100 billion figure, जो पहले फिगर पहुंची थी, वो पता नहीं किस बेसिस पे भी लेके आए थे, विदाउट एनी कंसल्टेशन था, एंड फाइनली वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ. तो दिस टाइम अराउंड वी नीड टू हैव अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस राइट पहले से डिफाइन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. और एक सेकंड लेवल प्रॉब्लम है जो कि पहले एड्रेस नहीं हुई थी, जो इस बार हमें करनी पड़ेगी, that whatever sum is going to come, this should be distributed among mitigation, adaptation, loss and damage, as well as several other heads. किसके अंडर कितना expenditure allowed होगा. And finally, even more important, climate finance flows are currently heavily skewed in favor of mitigation actions, while developing countries are wanting that कि आप इसको adaptation के लिए दो, है ना. This is something which is very very important. So please try to understand. ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी. इनफैक्ट मेंस के लिए आपका एक ऐसे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं. किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं कि जैसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आया था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू कार्बन क्रेडिट, है ना. कार्बन क्रेडिट वाज आल्सो काइंड ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस व्हिच वाज देयर, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मनी. कार्बन क्रेडिट्स की जो एक विंडो थी वो उतना कारगर नहीं रही है आज की डेट में. दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारी जो बातें क्लाइमेट चेंज की धरी की धरी रह जाएंगी अगर ये हम नहीं करेंगे. सेकेंड, अभी एक टॉपिक न्यूज में है, दैट इज अबाउट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल डीलिस्ट सम लॉस्ट मॉन्यूमेंट, है ना. सम मॉन्यूमेंट्स हैव बीन लॉस्ट और उसको वो डीलिस्ट करने वाला है. एंड द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाई, है ना, व्हाट आर द स्पेसिफिक लॉस. So recently what has happened, Archaeological Survey of India has decided to delist 18 centrally protected monument that it has assessed are not part of national importance. उसको वो delist करने वाला है. The 18 are part of earlier list of monument that has said they are untraceable. हम untrace हो गए हैं, हम पता ही नहीं चल रहा हमें कहाँ गए. Then इसके अंदर क्या क्या है, जैसे खोस मीनार है, this for prelims because उसका लॉजिक नहीं है. मीनिंग हमें समझना पड़े, मीनिंग ऑफ डीलिस्टिंग. डीलिस्टिंग का क्या है, क्या होगा वो भी समझते हैं. सो ASI, as it works under the Ministry of Culture, it is responsible for protecting and maintaining certain monuments and archaeological sites that have been declared of national importance under which act? The Ancient Monuments Preservation Act, as well as Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958, which is known as AMA-ASR Act. इसके ऊपर इनफैक्ट मेन सभी क्वेश्चन आ चुका है. So delisting effectively means that it will no longer be conserved and protected by ASI. उसको दोनों चीजें हट जाएंगी, ना कंजर्व होगा ना प्रोटेक्ट होगा. And under this
what will be eventually the follow-up? Under this act, AMESR Act, any kind of construction activity allowed नहीं होती है around protected area. Any kind of construction activity is not allowed around a protected site. Once the monument is delisted, construction and urbanization in the area can be carried out in a regular manner. तो ये इसका बहुत बड़ा impact है जो आप prelims के लिए याद कर सकते हो, ठीक है? Then here decrease हो जाएगी figure from 3693 to 3675 and the gazette notification has come with respect to this on 8th of March. And इसके बाद 2 months की window दी गई है to everyone that they can come up with their objection as well as suggestions with respect to this. And what does it mean for a monument to be untraceable, right? So what this act has been protecting all the monuments inside which are of national importance, at least more than 100 years old, including temples, cemetery, inscription, tombs, etc. तो इन सबको कर रहे हैं, which are of historical significance. They are scattered across the country, and over the decades, many of them have been lost to urbanization, encroachment, construction of dam reservoirs, or even neglect. And as we have seen, ASI should regularly inspect protected monument, but वो हो नहीं पाता. They don't have the capacity. In fact, इसके ऊपर काफी ज़्यादा detail एक report भी आई थी. The report came from the CAG office. So this, however, has not happened with uniform effectiveness. The ASI has, which was formed in 1861, उन्होंने कुछ monuments को protect करना start किया था from 1920s and 1950s. However, the ASI also concerned more of uncovering new monuments and sites instead of protecting the existing one. तो इनका फोकस रहता है हमेशा नई साइट्स को अनकवर करने में, rather than focusing on the protection of the earlier ones. In fact, in December 2022, they have submitted a report. Okay, they have submitted a report in which they have told that overall there are 3693 centrally protected monuments, and out of that, around 50 are missing, which includes different kinds of heads like lost to rapid urbanization. Okay. 14 in fact lost to urbanization, 12 they were submerged by reservoir dams, remaining 24 are untraceable. And what they have told that only 248, अगर हम बात करें तो 10% भी ऐसे monuments नहीं है जिनको ये protect कर पा रहे हैं with security guards. Alright, in fact 248 locations पे ही हमारे 2578 security personnel जो है वो तैनात रहते हैं, and on the other hand they require around 7000 personnel, which is something which is not there. So capacity का बहुत बड़ा issue है. Now the most important question for topics like this in prelims is कि इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या where disappearance of the monuments was noticed. So ASI had told eventually that no comprehensive physical survey of all the monuments had ever been conducted after independence. किया ही नहीं है. However, in 2013, CAG said that at least 92 such sites had gone missing, and CAG report has also said that ASI did not have reliable information on the exact number of monument under its protection. So that's something which is a very problematic thing for us. Alright, कि हमें पता ही नहीं exactly हम किसको protect कर रहे हैं. And then parliamentary also noted that out of 92 monuments declared as missing by CAG, 42 have been identified due to efforts made by ASI, and while the remaining 50, 26 were accounted for as earlier, while 24 they are untraceable. And that is something which we need to understand. कौन सा एक्ट है, किसने क्यों, क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है डीलिस्ट का, तो वो आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए. ठीक है. Then एक study आई है with respect to where did Homo sapiens go after Africa. All of us know जो अभी latest theory है till today, that is that Africa is the birthplace of the modern species of Homo sapiens. So our species roughly emerged in Africa more than 3 lakh years ago with a migration out of continent around 60 to 70,000 years ago, and that led to the beginning of the global spread of Homo sapiens. ठीक है, वो spread शुरू हो गया. What did the study find? अभी study ने क्या कहा कि after this, okay, after the initial banned society, because जो initial Paleolithic phase था उसमें banned society था. Banned society include at max 100 people living together, right? तो वो technical आपको याद रखना पड़ेगा. They appear to have lingered for thousands of years as homogeneous population in geographical hub that spread in Iran, southeast Iraq, and northern Saudi Arabia, before going to settle all of Asia and Europe starting from 45,000 years ago. तो ये एक लेटेस्ट स्टडी आई है, ठीक है. ये स्टडी जिसको कंडक्ट किया है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ पेडोवा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेंजन जर्मनी. वहाँ से ये स्टडी आई है कि भाई इनिशियली वो अफ्रीका में थे. फ्रॉम अफ्रीका दे माइग्रेटेड टू दीज एरियाज ऑफ आवर वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग ईरान, साउथ ईस्ट इराक एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट सऊदी अरेबिया. Why did they go to this area? Because they were finding ideal habitat. And the name which has been given to this area is Persian Plateau. Alright.
And our results, they have said in the results, our results provide the first full picture of whereabouts of ancestors of all present day known Africans in the early phases of colonization of Eurasia. And these people lived in small mobile bands of hunter-gatherers, and these areas were having ample resources for their consumption, including the animals which they were able to do, even the diet which was required by them, including edible plants, etc. And the small animals, they were available here. The people inhabiting the hub at time apparently had dark skin and dark hair, resembling the Gormus or the Anok people living past in the areas of East Africa. Okay, so they are saying they are comparable to the Anok people. Cave art also started during the same time period, and eventually we also see the settlements in different parts of the world. तो इतना important मैं इसको नहीं कहूँगा, but फिर भी ये है कि एक idea आपको लग जाना चाहिए कि एक नई theory आई है which talks about how the people moved from Africa, and from Africa they eventually moved to the area of Iran, southeast Iraq, as well as northeast Saudi Arabia, and the area was very much habitable. In fact, जो V. Gordon Child है, V. Gordon Child is one of the most famous archaeologists from Australia. उन्होंने जब अपनी थीसिस दी थी विद रिस्पेक्ट टू नियोलिथिक, तो उन्होंने भी इस एरिया को चूज किया था कि एग्रीकल्चर की भी जो बिगिनिंग है इन द वर्ल्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एरिया इटसेल्फ. राइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ वन टॉपिक व्हिच हैज बीन कवर्ड हियर, इट इज अबाउट ICCC. सी फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं. इट इज अबाउट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. तो आर्मी से रिलेटेड नहीं है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, कृषि, है ना. तो नाम से पता नहीं चलेगा ICCC किससे रिलेटेड है, बट ऐसा भी बेसिक लेवल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस एग्जाम में. और यही होता है कि भाई देखो, हर साल उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया करना होता है, तो वो ऐसे ही होता है. सो व्हाट इज दिस कृषि ICCC? ये आप GS3 के लिए भी पढ़ सकते हो, बिकॉज GS3 में एग्रीकल्चर के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं फॉर डिजिटाइजेशन, फॉर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. तो वहाँ सब में ये आप स्टेप में मेंशन कर सकते हो. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, वो भी इसमें आ जाएगा. तो दिस इज अ टेक बेस्ड सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल IT एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म. तो एक तरीके से इन्होंने डैशबोर्ड बनाया है जिसमें सारी चीज़ें इनको पता चलती रहेंगी. सेंटर कहाँ पर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है. ऑलराइट, एंड क्या क्या यूज़ करते हैं? इट यूज द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, geographical information system to collect and process large amount of granular data on temperature, rainfall, wind, speed, crop yield, as well as production estimate, and present in the graphical format. उन्होंने एक्चुअली 8 लार्ज स्क्रीन लगाई है, 55 इंच LED लगाई है, which can give us real time data of crop yields, production, drought situation, cropping pattern. Okay, and this is something which is going to be very useful because evidence based अगर policies बनती है, evidence basis पे अगर policy initiatives लिए जाते हैं और फिर implementation होता है तो उसका outcome बहुत अच्छा आता है. ठीक है, so you can see the relevant data as a result of this, and this uses platform including कृषि decision support system जो अभी बन रहा है eventually to collect micro level data, process it and present the macro picture. And this has a contact center and a help desk facility with the operator's handset capable of being converted into a call center. Now, overall objective क्या है? ये ऐसा कुछ स्कीम के लेवल पे आ सकता है. So it will enable comprehensive monitoring of farm sector by making available at one place geospatial information received from multiple sources, including remote sensing, float level data received from soil survey, weather data, okay, from IMD, then even sowing data from digital crop survey, farmer and farm related data from Krishi Mapper, and application for geofencing. Geofencing के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एक बार. एंड जियो टैगिंग ऑफ लैंड, market intelligence information from the unified portal for agriculture statistics, and yield estimation data from general crop estimation survey. तो इन सारी चीज़ों को यूज करके we can monitor the farm sector in a very real time level. And now इसका फायदा क्या होगा? Can this generate individual farmer specific advisories? So going forward, yes, this can create an ecosystem based upon which individual farmer level advisory can be generated through apps like Kisan and e-Mitra chatbot developed for PM Kisan beneficiaries. And the AI machine learning based system will identify farmer through his or her मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, और फिर उसके बेसिस पे उनको वो काफ़ी सारी इनपुट्स दे सकता है. इट विल देन जनरेट एडवाइजरी. फॉर दिस सिस्टम विल यूज द Bastini platform that allows translation into several Indian languages.
बिकॉज क्या है ना कि सारे जो फार्मर्स हैं, दे डू नॉट हैव दैट एनी सिंगल लैंग्वेज, किसी सर किसी को हिंदी नहीं आती है तो डिपेंडिंग अपॉन द रीजनल लैंग्वेज को कन्वर्ट भी कर देंगे। इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। फार्मर को एडवाइस दे सकते हैं, ड्रॉट एक्शन प्लान हम बना सकते हैं, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं, फाइनली फार्मर के डेटा की रेपोजिटरी हमारी बन जाएगी। दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू लर्न फ्रॉम टुडेज एक्सप्लेन सेक्शन। अगर मैं आप बोलोगे इंपॉर्टेंस के लेवल पे तो क्लाइमेट एक्शन वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ICCC जैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं आपके, ठीक है। अफ्रीका वाला आई वुड से सिर्फ याद रखना, ठीक है, बिकॉज दे हैव मेंशन दिस टेबडे केव इन ईरान, ओके। तो ये इसको आप याद कर सकते हो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से। एंड जो नीचे ASI वाला टॉपिक है वो बस हमें इसलिए याद रखना है कि इवेंचुअली क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ऑफ डी लिस्टिंग ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। छोटे छोटे और स्निफेट्स के बाद देख लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इट हैज नैरोड डाउन टू 1.2% ऑफ GDP, ओके। द डेटा हैज बीन गिवन बाय RBI ड्यूरिंग द अक्टूबर टू दिसंबर। करंट अकाउंट डेफिसिट की डेफिनेशन आई होप ऑल ऑफ अस नो इट बाय नाउ, है ना। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and it was a key indicator of the health of external sector, and this has reduced from 2.6% to 1.2% during this time period. Then GST frauds चल रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, एविएशन का, फेक क्लेम्स वर्थ अराउंड 19,000 करोड़, जिनमें कि टॉप पे कौन है, हरियाणा एंड दिल्ली। देन इफ वी सी अदर टॉपिक्स, तो एक टॉपिक यहाँ पे है द डेविल इज इन द फुट नोट। सो व्हाट हैज हैपेंड, राइट, बहुत सारी आपकी रिपोर्ट्स आती रहती टाइम टू टाइम। जो अभी हमने लेटेस्ट बात भी किया था, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, इसने रिपोर्ट दिया था इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया एंड द राइज ऑफ बिलियनियर राज। सो दिस रिपोर्ट टॉक्ड अबाउट कि इंडिया में 1% जो सुपर रिच पीपल है, दे आर हैविंग मोर देन 20% ऑफ द एनुअल इनकम, एंड वेल्थ की बात करें तो 40% तक इंक्रीज हो जाती है। नाउ दिस हैज बीन क्वेश्चन बाय सुरजीत भल्ला एंड करण भसीन। ये उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? बिकॉज जो डेटा और इन्फ्रेंसेस इन लोगों ने लिए हैं वो सही तरीके से नहीं लिए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। इनफैक्ट व्हाट दे आर डूइंग कि दे हैव कम आउट विद सम वेरी गुड एनालिसिस। दिस एनालिसिस टॉक्स अबाउट the country US and India. What they have said that US represent a much richer information environment with a plethora of data on income as well as wealth relative to an emerging market economy like India, right? Because we are always data constrained environment. हमारे पास ठीक से डेटा होता ही नहीं है किसी चीज के लिए, specifically with respect to this. So what had happened that these same gentlemen who was given a report with respect to India, they also had done a similar kind of analysis for USA. एंड दे वर नॉट एबल टू डू इट विदाउट एनी एरर्स। तो वो बार बार उसको रिवाइज करते रहे। कभी उन्होंने कहा टॉप 1% है 9%, बाद में उसको 15% कर दिया, फिर कुछ और कर दिया। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन हैपन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑल्सो, विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी मेकिंग। सो दैट्स व्हाई दे हैव सेड दैट कि जो ये एनालिसिस आया है, दिस इज नॉट हैविंग कि अनमैच्ड लेवल ऑफ डेटा नहीं यूटिलाइज किया है, मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन किया इन्होंने। बट एनीवे दिस इज समथिंग, अब उसके अंदर हम स्टैटिस्टिशियन का एग्जाम तो ये है नहीं UPSC सिविल सर्विसेज वाला, तो उसके अंदर नहीं जाने वाले। बट आपको पता होना चाहिए दिस हैज बीन क्वेश्चन। देन allowed abstention. So this is with respect to the steps which are required to be taken with respect to Israel, right? Israel is not stopping its war on the Gaza Strip, so even US has now come in support of a ceasefire. So let us just read this article very quickly ताकि आपको थोड़ा सा perspective समझ में आ जाए. So it was an abstention heard around the world except perhaps where it mattered most. So on March 25, US allowed the first UN Security Council resolution demanding an immediate ceasefire to be passed on. 14-0. Since Israel began its retaliation after 7th October attack by Hamas, US has already vetoed 3 times. 3 बार वो veto कर चुके हैं कि कोई ceasefire नहीं होगा. But now they are also in favor of this. And this resolution demanded both a ceasefire allowing aid to reach Palestinian civilians as well as release of all remaining hostages in Hamas custody. Unfortunately, this has not been accepted by Israel, and the Netanyahu government is painting the abstention, and even tasted criticism of humanitarian excesses in Gaza as a betrayal of Israel. So this is something which they are saying. However, the important thing is कि now अब क्या करें, right? We have seen lots of casualties in Gaza, and this is the time where we require to think of us as a human first, rather than talking with respect to divisive politics or being only influenced by ideas of nationalism. These critics of US stand on Israel points to 2 factors. First, that given that resolution is non-binding and US continues to supply weapons, ना एक बार बात कर रहे हैं ceasefire, but they're also supplying weapons and aid to Israel.
it is little more than rap on the knuckles. Second, it is a gesture which is merely to mollify the significant number of Democrat voters opposed to Israel's successes in Gaza ahead of US presidential elections. This criticism, however, ignores the fact that Washington has been Israel's strongest supporter and, in fact, a shield in international fora and by far its staunchest ally. In addition, Euro has taken place in the broader context of increasing disagreement between US President Joe Biden as well as the Netanyahu. Israel's PM has reacted sharply to US vote and scrapped the visit to Washington of a senior Israeli delegation to discuss the proposed ground offensive in Rafah, which which US has opposed. But now the problem is over 30,000 civilians have died, 13,000 of them are children. So this is the time, right? Rather than respect Biden's stated red line, Israel must not engage in ground offensive, and this is the time where it has to become more responsible. We all understand that its rights, they were affected by the actions taken by the Hamas, but right now is the time. Think of yourself as more of a human. You cannot just keep on going with the violence. Unstoppable violence is something which is not the remedy to stop these things in the long run. All right. So these were the important article from exam point of view. बाकी भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो, but more important is like this कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं उसको आप थोड़ा सा फॉलो करिए. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू इम्प्रूव दिस सीरीज. हम आपको आपसे ये भी बताइए कौन कौन से आर्टिकल बहुत अच्छे जो आप रीड कर सकते हो. नॉट ओनली फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस हमेशा प्रायोरिटी रहता है मेरे लिए बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे डाइवर्स आर्टिकल्स आते हैं. बट विल ऑल्सो सी सम आर्टिकल्स which are very good from the Hindu also. तो वो भी हम expand करेंगे in the coming times. And second, which is very very important, we're going to provide you summaries. हम आपको summaries provide करेंगे कुछ अच्छी articles या आप समझ सको note making कैसे की जाती है. And number 3, we are also going to give you important questions on these topics ताकि आपकी prelims की जो preparation है वो भी चलती रहे और mains के लिए हम आपको कुछ questions देंगे answer writing के लिए. तो अगर इतना आप करने लग जाओगे तो this can become your one stop solution for all the current affairs related problems with respect to UPSC. Alright. तो इसको आप अपनी तरफ से पूरा अच्छे से करिए. थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस एंड कीप ऑन डूइंग द ग्रेट वर्क दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग. अच्छे से अगर करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और जल्दी आएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच.